Namaskar and welcome to Sansad TV. I'm your host Rajiv Kumar Singh and you have started watching House Highlights, the program where we bring a comprehensive overview of the day's proceedings from both the Houses of Parliament. Before we delve into the details, let us begin with the headlines. Rajya Sabha passes the Indian Ports Bill 2025. The bill contains provisions related to regulating the functioning and management of ports. The Maritime State Development Council and state maritime boards will be accorded recognition. Measures for environmental protection included in the bill. Special discussion held in Lok Sabha on India's first ISS astronaut. MOS Jitendra Singh hails Shubhanshu Shukla, stresses space program's role in Viksit Bharat 2047, says an Indian on moon will herald Viksit Bharat. And proceedings in both houses affected by opposition protests on Bihar electoral roll issue. Question hour and 0 hour proceedings hampered in Lok Sabha and Rajya Sabha. Government accuses opposition of irresponsible behavior. Let us now begin with the proceedings in the lower house on the 18th day of the monsoon session. Proceedings in the Lok Sabha began with the question hour on Monday. On Mondays, questions related to the ministries of corporate affairs, culture, education, environment, forest and climate change, finance, labor and employment, skill development and entrepreneurship, tourism, youth affairs and sports are listed for oral answers in the Lok Sabha. JDU member Dr. Alok Kumar Suman asked a question related to safety audit of schools. Minister of State for Education Jayant Chaudhary answered the query. Let us listen in. बिहार में 50 केंद्रीय विद्यालय है जिसमें 16 विद्यालयों में अपना भवन नहीं है और हमारे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज भी एक पुराने स्कूल के पुराने भवन में चलता है जबकि वहां जमीन भी उपलब्ध करा दी गई है और विद्यालय अपने छात्रों को इस पुराने भवन के चलते बहुत तकलीफें होती हैं। बरसात के दिनों में सड़क नहीं है जबकि मैंने अपने MP लेड फंड से वहाँ की सड़क की व्यवस्था स्कूल तक कराई है महोदय। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से ये प्रश्न है कि मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के केंद्रीय विद्यालय को कब सरकारी भवन मिलेगा जबकि जमीन उपलब्ध करा दी गई है। साथ साथ सोशल ऑडिट की क्या व्यवस्था की गई है महोदय। सभापति जी, वैसे मुख्य प्रश्न से संबंधित इनका पूरक सवाल नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के लिए प्रयासरत हैं और मैं इसलिए उनको जानकारी देना चाहता हूं। गोपालगंज 2004 में सिविल सेक्टर में केंद्रीय विद्यालय स्थापित हुआ और अभी ये टेम्परेरी अकोमोडेशन में ही चल रहा है। अभी उसकी कार्रवाई परमानेंट में शिफ्ट करने की चालू है। 4.63 एकड़ जो जमीन है अभी राज्य सरकार ने ट्रांसफर भी KVS को किया है, इसलिए वो इन प्रोसेस है। मैं वो जानकारी इनको देना चाहता हूँ। बाकी सोशल ऑडिट की उन्होंने बात की है। इस संबंध में सेफ्टी पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, NEP में प्राविधान है और समय समय पे भारत सरकार भी राज्य सरकारों को, स्टेट बोर्ड्स को, सभी मैनेजमेंट के स्कूलों को इस संबंध में गाइडलाइन भी जारी करती है। कोई समझौता बच्चों के सेफ्टी से हम नहीं कर सकते हैं और समय समय पे समग्र शिक्षा में भी जो राज्य सरकार प्रस्ताव देती है इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए, उस पर भी भारत सरकार उनका सहयोग राज्यों को करती है। कि 26 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डायरेक्टिव दिया सभी राज्य सरकारों को, यूटीज को, टू इंश्योर स्टूडेंट सेफ्टी एंड वेल बीइंग इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑफ स्कूल बिल्डिंग। 7 अगस्त 2025 को भी हमने एक और डायरेक्टिव जारी किया। साथ साथ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जॉइंट मीटिंग्स होती हैं सभी राज्य सरकारों के साथ, उसकी बैठक भी हमने
हाल में 4/6/2025 में की थी। सोशल सेफ्टी ऑडिट और की जानकारी भी जो है यूडेस के माध्यम से हमें मिलती है। सभी राज्य सरकारों के आंकड़े हमारे पास जो राज्य सरकार के माध्यम से आते हैं, उस संबंध में बताना चाहता हूं कि स्ट्रक्चरल और सेफ्टी ऑडिट में बिहार में 63% स्कूल्स का स्ट्रक्चरल और सेफ्टी ऑडिट हुआ है, जो यूडेस की जानकारी मैं साझा कर रहा हूं। Question hour in the lower house on Monday was repeatedly disrupted by the opposition. The speaker urged the protesting members to restore order in the house. However, as the situation remained confrontational, the speaker first warned the opposition members and then adjourned the house till 12 noon. मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर जाके विराजें। ये प्रश्नकाल है। जितनी जोर से आप नारेबाजी कर रहे हैं, उतनी जोर लगाकर आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो देश की जनता का कल्याण होगा। और माननीय सदस्यों, मैं आग्रह कर रहा हूं कि आपको जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और देश की जनता आपको देखेगी। मैं आपको पुनः कह रहा हूं, कई विधानसभाओं के अंदर इस तरह की घटना पर माननीय सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं, सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास आप नहीं करें, यही मेरा आपसे आग्रह है। सभा की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। After the House reassembled at noon, Sandhya Ray was in the chair. She first informed that the Speaker had rejected all the motions related to adjournment. Then she asked for important papers to be laid on the table of the House. The papers laid on Monday concern the Ministry of Culture, Ministry of Parliamentary Affairs, Ministry of Education, Ministry of Finance, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal on Monday first moved for the introduction of the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2025. He then later also moved for the bill to be referred to a select committee of the Lok Sabha. I rise to move for leave to introduce the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2025 to amend certain enactments for decriminalizing and rationalizing offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business. Madam, with your permission, I rise to move the motion that the bill to amend certain enactments for decriminalizing and rationalizing offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business be referred to a select committee of the Lok Sabha consisting of the members to be nominated by the Honourable Speaker. The terms and conditions regarding the committee will be decided by the Honourable Speaker. The committee shall make a report by the first day of the next session. Education Minister Dharmendra Pradhan on Monday introduced the Indian Institutes of Management Amendment Bill 2025 in the Lok Sabha. The bill will further amend the Indian Institutes of Management Act 2017. Honorable Chairperson Madam, with your kind permission, I move to leave to the introduced bill further to amend the Indian Institute of Management Act 2017. After another adjournment, the House reconvened at 2 p.m. A special discussion took place on India's first astronaut aboard the International Space Station and the critical role of space program for Viksit Bharat by 2047. Before the discussion, the Speaker hoped for constructive inputs from members of all political parties. माननीय सदस्यगण, आज हम सदन में अंतर्राष्ट्रीय
अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका विषय पर विशेष चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व और उत्साह का क्षण है। सदन इस ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला का भारत की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। उनकी अंतरिक्ष यात्रा और सफल वापसी केवल एक मिशन की सफलता नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला की ये उपलब्धि हमारे युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है। आज भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम वैज्ञानिक श्रेष्ठता और विशेषणता से पूरे विश्व में अपनी विशेष पहचान बना चुका है। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक चर्चा संवाद करें। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र की उपलब्धियों एवं भावी संभावनाओं पर अपने सकारात्मक विचार भी व्यक्त करें। Taking part in the special discussion, Minister of State for Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, highlighted the achievements of Group Captain Shubhanshu Shukla, the first Indian to reach the International Space Station, as well as India's future space missions and the growth of the space economy. आज जो विपक्ष जिस तरह का प्रदर्शन कर रहा है, ये उनकी अपने प्रति नाराजगी का इजहार है, क्योंकि वो हर अपने मंसूबे में विफल हैं, उनकी कोई बात नहीं बन पा रही। फिर भी मैं अपनी बात रखने से पहले, ताकि कहीं ये संदेश ना जाए कि हमारी ओर से पर्याप्त प्रयास ना हो, पूरी विनम्रता से सर झुका करके ये अपील करूंगा सदन के तमाम साथियों से, विपक्ष वालों से भी, कि यदि आपको सरकार का या देश का लिहाज नहीं, तो कम से कम इन अंतरिक्ष की उपलब्धियां प्राप्त करने वाले विशेषज्ञों के लिए आप इस चर्चा में भाग लें, वापस आएं। अहमद फराज का एक बड़ा मशहूर शेर है कि किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ, और किस किस को सुनाएंगे हम तुम्हारे शोरो गल का सबब, तू मुझसे नाराज है तो शुभांशु के लिए आ। बहरहाल दुनिया किसी के रोकने से नहीं रुकती, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। विकसित भारत की ये तेज रफ्तार यात्रा यूं ही चलती रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। और प्रधानमंत्री मोदी जी के दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प को कोई हिला नहीं सकता। Nobody can shaken the courage and courage of conviction of Prime Minister Modi. Having said that, अध्यक्ष जी, आज एक ऐसा वक्त है जब सारा देश जश्न के माहौल में है। हर माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करती है कि वो बड़ा होकर के शुभांशु शुक्ला बने, और हर बच्चा ये ख्वाब देख रहा है कि मैं भी बड़ा होकर शुभांशु शुक्ला बनूं। आज दुनिया ने भारत की क्षमताओं के आगे सर झुकाया है। अभी कल ही शुभांशु का इस सफल यात्रा के बाद राजधानी दिल्ली में वापसी हुई है, आगमन हुआ है, और उससे कुछ ही समय पहले ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत की अंतरिक्ष में क्षमताओं का प्रदर्शन धरती से आकाश तक देख करके सारे विश्व ने हिंदुस्तान का लोहा माना है। जहां हमारी स्पेस इकोनॉमी केवल नाम मात्र हुआ करती थी, आज 8 बिलियन US डॉलर तक जा पहुंची है, और इतनी तेज रफ्तार में उसकी प्रगति हो रही है कि आंकड़ा ये दर्शाता है कि आने वाले 8-10 वर्षों में इसमें लगभग 5-6 गुना वृद्धि होगी,
हम 45 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच करके देश की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए तैयार होंगे। देश को चौथी दर्जे से पहले दर्जे की इकोनॉमी बनाने में एक स्पेस की एक प्रमुख भूमिका रहेगी। I have the confidence to say that India has produced a unique model of using or applying space technology for the ease of living, for infrastructure projects, for development projects. Today, space technology has entered each and every household in India. 2026 में हमारा वायु मित्र फाइनल रिहर्सल होगा। 2027 में पहला मानव हिंदुस्तानी अंतरिक्ष में जाएगा, गगनयान। 2035 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 में एक भारतीय चांद की धरती पर कदम रखेगा। और इसलिए मैं ये कहते हुए यकीन भी है और गर्व भी कि मोदी जी के संकल्प के विकसित भारत की सिद्धि 2047 से होने से कुछ साल पहले ही एक भारतीय चांद की धरती पर पहुंच करके विकसित भारत की घोषणा अंतरिक्ष में चांद पर करने वाला है। Let us now take a look at what took place on Monday in the Rajya Sabha. On the commencement of Rajya Sabha on Monday, Deputy Chairman Harivansh expressed deep sorrow over the death of L. Ganesan, who died on August 15th. L. Ganesan was a former member of the Rajya Sabha and had served as the governor of Nagaland. The upper house observed silence to show respect for the departed leader. In Rajya Sabha, important papers related to various ministries were placed on the table of the House. These included papers from the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Parliamentary Affairs and Civil Aviation. Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh informed the House that he had received 19 notices from different issues under Rule 267. He did not admit these notices because some did not conform to the prescribed format and others were on issues which were sub judice. 19 notices have been received today on 4 different subjects under Rule 267. Of these, 11 notices do not contain a motion drawn in proper terms as per the requirement of Rule 267 to obtain a decision of the House. Further, 10 notices do not mention the date on which their notices under Rule 267 are to be invoked. 11 of these notices do not contain rules which the members seek to suspend. In addition, 13 of these notices demand discussion on a matter which is sub judice. Since none of these notices received today are in adherence to the requirement of the rules, I am not admitting any of the notices. Insisted on a special summary revision of the electoral roll in Bihar. Protests intensified. Harivansh insisted on proceeding with the 0 hour. Dr. Dinesh Sharma asked his question about why different roads were named after historical invaders. The opposition started sloganeering and the protests grew louder. The deputy chairman then adjourned the House until 2 p.m. After the House reassembled at 2 p.m., Rajya Sabha passed the Indian Ports Bill 2025, which ushered in a new era of India's maritime future. Union Ports, Shipping and Waterways Minister Sarbanand Sonowal, while introducing the bill, claimed that the last 11 years of the NDA government, led by Prime Minister Narendra Modi, had introduced 11 new laws to benefit coastal commerce. Indian Port Bill 2025 to consolidate the law relating to ports and promote integrated port development, facilitate ease of doing business and ensure the optimum utilization of India's coastline, establish and empower state maritime boards for effective management of ports other than major ports, establish the Maritime State Development Council for fostering structured growth and development of the port sector, provide for the management of pollution, disaster, emergencies, security, safety, navigation,
and data at ports, ensure compliance with India's obligation under international instrument to which it is a party, take measures for conservation of ports and provide for adjudicatory mechanism for the redressal of port-related dispute and address matter connected therewith or incidental thereto as passed by Lok Sabha be taken into consideration. He further stressed that the bill would modernize India's port governance, enhance trade efficiency and solidify India's position as a global maritime leader. Various parties took part in the discussion and gave their suggestions on the bill. The Indian Ports Bill 2025 replaces outdated provisions of the Indian Ports Act 1908 with modern and contemporary regulations. It aims to simplify port procedures and digitize operations to enhance ease of doing business. It is really very helpful for not only the fishing trade and the internal trade and external trade, but it is also giving an employment to these fishermen community and other people who are residing in the coastal line. कि जो भी छोटे छोटे मछुआरे हैं, जो छोटे छोटे बंदरगाह के मालिक हैं, छोटे बंदरगाह के मालिक, उनके लिए भी इस बिल में कुछ अच्छी सुविधा हो, इस तरीके की मांग मैं यहाँ पर करता हूँ. In this bill, every port must have emergency response and disaster management plans. Compliance with international ship and port facility security code is ensured. यह विधेयक लॉजिस्टिक्स लागत को उल्लेखनीय रूप से कम करेगा और हमारे निर्यात की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएगा. मानना है कि इससे न केवल बड़ी कंपनियों को बल्कि हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को भी लाभ होगा. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से बंदरगाहों का विकास होगा, जिससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे. नंबर 3, पर्यावरण संतुलन. बंदरगाह विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण हेतु हरित ऊर्जा, तटीय पारिस्थितिकी और प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष बल दिया गया है. I would say maritime nations, countries which are mainly sitting on the shipping routes, and they are doing a lot of transshipment cargo also. Those countries are doing even volumes bigger than a large country like India. And therefore, it is imperative that we do expand our seaports. It is a vital infrastructure. The bill addresses the management of pollution, disasters, emergencies, security, safety, navigation and data of ports. Let us listen to the minister's reply to the discussion. I am sure that after this August House passes this particular bill, then definitely in the near future, whatever objective we have set, the targeted destination we have set for the country, to achieve that goal, this will empower us, and it is eco-friendly. And there are some provision which was missing in the earlier legislation. Let me cite it out. Number 1, this is about integrated planning. What is integrated planning? It statutorily establishes the Maritime State Development Council, a recommendatory body to facilitate integrated long-term planning and data-driven decision-making across all ports. It was missing in the earlier Act. Number 2, dispute resolution. If there is any dispute among the concessionaires, how it can be sorted out within a short span of time. The bill introduces state-level dispute resolution committee to provide a fast, efficient and transparent mechanism for resolving port-related disputes. So this is the way ease of doing business environment will be created. Environmental and safety compliance. It is very, very important. It mandates, particularly the present bill, that all ports adhere to international convention like MARPOL, requiring them to have robust plan for emergency preparedness. Number 1, emergency preparedness,
pollution prevention, and disaster management. Third, digital integration. In line with our international obligation, the bill empowers the government to direct ports to establish a maritime single window system, enabling seamless electronic data exchange and improving the ease of doing business. Because whatever tariff will be set by the authority, it will be made transparent. It will be published so that whoever is interested to operate business in that particular sector, he will be very much like concerned, and he will be very much like having easy access to this particular data. Then we have modern day deterrence against violation. The bill consolidated penalties into schedule, updates their quantum, decriminalizes certain offences and removes outdated provision, replacing them with modern and relevant provision. The bill was later passed, taking a sense of the House via voice vote. That's all in this bulletin. We will continue to track the proceedings of Parliament throughout the monsoon session and keep you abreast of all important developments in our program, House Highlights. Till we meet next, goodbye.